اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وطمرة فؤادي. فقال: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمّا. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وطمرة فؤادي. فقال لي: يا أمّا إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختار الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟
قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء، ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي: يا رسول الله، هم
أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما، ولا مغموم إلا وكشف الله غما، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. नारे सलवात। اللهم صل على محمد وعلى محمद. पहले चंद अशार जनाब हज़रत के पास की शान में, फिर उसके बाद भी मसला समा खड़े वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। जिसे सजदे करे सजदा उसे अब्बास कहते हैं। वली का खून ज़हरा की दुआ शबीर की चाहत। वली का खून ज़हरा की दुआ शबीर की चाहत। बने इंसाफ से जो मिलकर उसे अब्बास कहते हैं। वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। बैन सकीना के लो जल्द खबर
खबर बाबा थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा लगता है अंधेरों से जिंदान में डर बाबा थे बैन सकीना के है कान मेरे जख्मी और खाक है बालों पर है कान मेरे जख्मी और खाक है बालों पर बोसीदा मेरा कुर्ता है खून में तर बाबा थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा तारीक अंधेरों में हूँ कैद बहुत दिन से तारीक अंधेरों में हूँ कैद बहुत दिन से अब याद नहीं कैसी होती है सहर बाबा थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा आवाज बुलंद बहता है लहू अब तक जख्मी मेरे कानों से बहता है लहू अब तक जख्मी मेरे कानों से खींचे है सितमगर ने इस तरह गौहर बाबा थे बैन सकीना के लो जल्द खबर बाबा लगता है अंधेरों से जिंदान में डर बाबा थे बैन सकीना के मैं शाम के जिंदा में घुट घुट के ना मर जाऊं मैं शाम के जिंदा में घुट घुट के ना मर जाऊं एक पल को नहीं खुलता जिंदान कदर बाबा थे बैन सकीना के लो जल्द खबर
बाबा है बाबा बहुत गम में तो याद किया तुमको है बाबा बहुत गम में तो याद किया तुमको तुम देख न बेटी को आए ना मगर बाबा थे बहन सकीना के लो जल्द खबर बाबा तुरबत पे मेरी बाबा एक शम्मा जला देना तुरबत पे मेरी बाबा एक शम्मा जला देना मैं आप के आने तक मर जाऊं अगर बाबा थे बहन सकीना के लो जल्द खबर बाबा लगता है अंधेरों से जिंदान में डर बाबा थे बहन सकीना के आवाज़ बुलंद सलावत सलाम उस पर जो खैजी भी है बीमार भी है पाँव में आबले आबलो में भी है हो सलाम उस पर बस बोलो सलाम मुझे खल्क में इन्हें आँखों ने क्या क्या देखा पर कहीं से थे पैगंबर सनम आका देखा मुझे खल्क में जुल्म मुजरिम सज्जाद ने
क्या क्या देखा जुल्म मुजरिम सज्जाद ने क्या क्या देखा घर लुटा कैद हुए बाप तलाशा देखा घर लुटा कैद हुए बाप कलाशा देखा मुझे खल्क में मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर मैंने देखा अली असगर का गला खून में तर मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा मैंने ज़ख्मी अली अकबर का कलेजा देखा मुझे खल्क में एक घटेड़ी शहीदी पुश्त पे लाए उसमें एक घटेड़ी शहीदी पुश्त पे लाए उसमें मैंने टुकड़े हुए का सम का सरापा देखा मैंने टुकड़े हुए का सम का सरापा देखा मुझे खल्क में जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुहरा से जाके ज़ैनब ने मदीने में कहा सुहरा से कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा कहूँ किस मुँह से के परदेस में क्या क्या देखा मुझे खल्क में मैंने देखा शह मज़लूम को खंजर के तले
मैंने देखा शह मज़लूम को खंजर के तले, मैंने बेघोर कफन भाई तलाशा, देखा मैंने बेघोर कफन भाई कलाशा, देखा मुझे खल्क में इन आँखों ने क्या क्या देखा, पर कहीं से ते पैगंबर सना आका, देखा मुझे खल्क में। العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والحمد لله الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة على أعدائهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. When we study the events that took place in Karbala, we come across certain statements by our Imam alayhi salatu wassalam which provoke thought in our minds. Before his departure from Madinatul Munawwara, Imam alayhi salatu wassalam left a written will in the name of his brother Muhammad Hanafiya. And in this will, Imam alayhi salatu wassalam categorically talks about his intention for the revolt and the uprising for which he was leading. He says to his brother Muhammad Hanafiya, إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما. I do not leave Madinatul Munawwara for acquiring fame, nor do I want to bring any fasad in the land, nor am I going to achieve anything by leaving Madinatul Munawwara except one. What I want to do is أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. I want to enjoin people to good and forbid them from evil. وأسير بسيرة جدي وأبي, and I want to be able to reach the seerah of my grandfather and my father Ali ibn Abi Talib And then he makes an invitation, a very subtle invitation to join him. He says, فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الْحَقِّ
one who accepts this invitation of mine, فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْحَقِّ. Allah subhanahu wa ta'ala loves those who are lovers of haqq and truth. وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ, and one who rejects this invitation of mine, أَصْبِرْ, I shall be patient. حتى يأتي الله بيني وبين القوم بالحق, until Allah subhanahu wa ta'ala brings His decision, His injunction, His decree between myself and my community. Wallahu ahkamul hakimin. Allah subhanahu wa ta'ala is the best of those who judge. A thought-provoking statement here for all of us to ponder over is the intention with which Imam alayhi salatu wasalam leaves Madinah al-Munawwarah. What is it that he wants to do? Then when we reach Karbala, one of the last statements of Imam alayhi salatu wasalam, one of the last statements, if you go to Karbala, may Allah subhanahu wa ta'ala take us there. When we go to Karbala, when you go for the outside ziyarah, they will show you various places. They will say, this is where the arms of Abbas fell, this is where Ali Akbar fell. They will show you Khaymagat. There is one spot they will show you there, where they will say that this is the place where Imam alayhi salatu wasalam delivered his last sermon, or one of the last sermons that was delivered there. This sermon is a very thought-provoking statement, and I think it is one of the most profound statements for the seekers of the truth that Imam alayhi salatu wasalam mentions there. He says to these people, know, before I say this statement, know that the people who Imam is addressing are Muslims. Understand the scenario that the people that Imam alayhi salatu wasalam is talking to are not only Muslims, but are practicing Muslims. They pray, they fast, they are engaged in nawafil, they recognize the Islamic injunctions, they know the dictates of Allah subhanahu wa ta'ala. They are not kuffar, they are Muslims. Imam alayhi salatu wasalam is speaking to the Muslims. Here, he says to them, and it is something that brings or provokes thought in the mind of the human being. Imam alayhi salatu wasalam says to these people, addresses them and tells them, in lam yakun lakum deena, if you do not have a religion, if you do not belong to any class, if you do not subscribe to any faith, if you do not have a religion, وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَادِ, and you do not fear the day of judgment, then فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, at least be free in this world of yours. Now, I have translated the word at least is mine. It is not part of the statement of Imam alayhi salatu wasalam. All he says is فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, be free in this world of yours. Spiritual freedom, spiritual liberation, moral freedom of an individual when we come to understand what morality means and what was the true message of Hussein. We will come to realize the statement of Imam alayhi salatu wasalam if we dissect this statement and understand it as profoundly as delivered by Imam alayhi salatu wasalam. He doesn't say at least. The word at least is used by me. If I translate it now regarding this freedom that Imam alayhi salatu wasalam is talking about, it means opt for freedom. Do not be shackled by so many other things around you. At least have a freedom of thought for yourself to know what you are doing. That brings us to the third statement, or the third sermon of Imam alayhi salatu wasalam, again on the day of Ashura, before I discuss this subject. He talks to the people, he says, Ayyuhan nas, ansibuni man ana. Oh people, tell me who I am. Now, is Hussein seeking sympathy here? Is Hussein looking for people to sympathize with him? No. He is one who has stood there to say, Mithli la yubayi'u mithla. A person of my status will never do bay'ah of Yazid ibn Muawiyah. I will never do it. He is not there scared. He has his children, and he has displayed
that he can give Ali Asghar away for Allah subhanahu wa ta'ala. So Imam is not seeking sympathy here. All he's saying to these people, Ayyuhan nas, O people, ansibuni man ana, tell me who I am. Thumma arji'u ila anfusikum, and then go back to your souls. Wa'atibuha, and shake these conscious of yours. Shake this soul of yours. Wa'atibuha. Thumma anzuru, and then look and understand and ask yourself, Hal yahillu lakum qatli, is it permissible for you to kill me? He's speaking to the Muslims. ثُمَّ انظُرُوا هَلْ يَحِلُّ لَكُمْ قَتْلِ, is it permissible for you to kill me? أَوَلَسْتُ ابْنَ بِنْتَ نَبِيِّكُمْ, am I not the son of the daughter of the same prophet that you believe as a prophet? أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءُ عَمُّ أَبِي, is أَوَلَيْسَ جَعْفَرُ الطَّيَّارُ عَمُّ أَبِي, is Ja'far al-Tayyar not the uncle of my father? أَوَلَيْسَ حَمْزَةُ سَيِّدُ الشُّهَدَاءُ عَمِّي, is Hamza Sayyid al-Shuhada not my uncle? أَوَلَمْ يَبْلُغْكُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ لِي وَلِأَخِي, have you not heard the statement of the Holy Prophet of Islam regarding me and my brother? هَذَانِ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ, that these two are the leaders of the youth of paradise. How is it that you do not recognize me? Let me make a statement here. The masa'ib and the gham that we express was not in the beheading of Imam Hussein, was not in the fall of Ali Akbar, was not in the three-headed arrow going through the small or a tiny neck of Ali Asghar, was not in the ladies being taken captives. No, that is not where the gham is. The grief is not recognizing the status of Abu Abdullah alayhi salatu wasalam. That is the greatest gham. That is the greatest grief that you can imagine. And he says this to them on the day of Ashura. He says this to the people himself. I am the son of the daughter of your prophet. What is it? And then he says, you will. فَمَا لَكُمْ لَا تَسْمَعُونَ, what is the problem that you do not listen to what I have to say? Why did Imam Zayn al-Abidin have to remind these people in Sham, for example, to tell them who he was? What was the need of him to say, أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَمِنَا, أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَصَفَا, أَنَا ابْنُ مَنْ عُرِجَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ? What was the purpose to say, I am the son of Makkah and Mina, I am the son of Zamzam and Safa, I am the son of so and so? What was it? What was Imam alayhi salatu wasalam doing? Apart from its historical context. He was trying to tell these people to understand the status of Imam alayhi salatu wasalam, not the status in person, but the status of the message that they were carrying with them. So let us now, having seen these three statements that I have mentioned before you, let us now understand the people who were present in Karbala with Hussein and the people that were present in Karbala against Hussein. Let us look at these two people and then see how Karbala affects me today, and what lessons, what values in 10 hours have I learned from Karbala, from the beginning of the event of Ashura until the end of the event of Ashura. As far as the day was concerned, was only 10 hours maximum. And in those 10 hours, the values and the fundamental messages that have been delivered by Imam, displayed by the ashab and the children of the Imam, are a lesson for us to learn until the day of death. Now let us look at myself and understand what were these people, what was missing in the people who killed Hussein? What was missing in them? They prayed. Not only did they pray, but they were extremely well cultured as far as salat was concerned. No, even on the day of Ashura, after killing Hussein ibn Ali, after killing Ali Asghar, after killing all the people there, they still prayed their salat of Asr. They still said Allahu Akbar. So they were Muslims and they were practicing Muslims. As far as fasting is concerned, they must have been fasting.
as far as the people who signed the declaration of killing Imam Hussein alayhi salatu wassalam, there were 70 scholars who signed that statement. As far as people, Hajj was concerned, they had been to Hajj many times. As far as their ritual Islam or the Islam, practicing Islam was concerned, they were practicing Islam. Not only were they practicing, they were thorough in their practice of Islam. What was missing? What was missing in those people? How did they not, or how could they not recognize the grandson of the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam? They were following the same Quran. They were saying La ilaha illallah. They were saying Muhammadur Rasulullah. You know Yazid ibn Muawiyah? Yazid ibn Muawiyah was no ordinary man. He may have been in his 30s only, but he was a poet of a very high status. His jumla, his poetry is famously known, and the people of the time knew, as far as poems were concerned, as to how he used to deliver them. His level of Arabic language was a very poetic and very classical Arabic. He had reached that status that when Janab Zainab delivered the khutbah, you will find in the annals of history, when Bibi Zainab delivered the khutbah, he was mesmerized by the choice of words, and then he looked at her and said, "You speak Arabic very well." He says this to Bibi Zainab, Yazid. He delivers 3 lines in his poem where, although he outwardly is the caliph of the Muslim Ummah at the time, he says, "La'ibat Hashim bil mulk." Prior to saying this, there are 2 other lines that he says, whereby he declares that this is not a masayib, but just to explain to you, the head of Hussein is in front of him. He has a stick in his hand. He is poking that stick in the eyes of Hussein's head. He is playing with the teeth of Hussein. While the captives' caravan and the ladies are present there, seeing what is happening. At this time, he delivers these 3 lines of his poem. And he says, in this poem, playing with Hussein ibn Ali, he says, لَيْتَ أَشْيَاخِ بِبَدْرٍ شَهِدُوا. I wish my ancestors of Badr had seen what I am doing today. Who were his ancestors of Badr? Muslims? No. Mughira, Abu Sufyan, they were not Muslims, were they? So, لَيْتَ أَشْيَاخِ بِبَدْرٍ شَهِدُوا. I wish my ancestors of Badr witnessed what I am doing with you. Towards the end of this poem, he declares himself as a non-Muslim. He says, لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ. Banu Hashim has played with this mulk. لَا خَبَرٌ جَاءَ وَلَا وَحْيٌ نَزَلْ. There was no news that came from the heavens, nor was there any revelation revealed to these Hashim people. How can you call this man, radiyallahu anhu, in any history, by any measure, how can you call this person who talks, who says himself that I do not believe in any revelation that has come in his poem? لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالْمُلْكِ. Banu Hashim has played with the mulk. How can I call him radiyallahu anhu? May Allah be pleased with him. It's a bankruptcy of the intellect and nothing else. But my fellow brothers, we need to understand the mentality of the people who were there. Yazid was there. He knew who he was. He understood who he was. Did he pray? Allahu A'lam. Did he fast? Allahu A'lam. But we are sure that many people, majority of the people in the army of Yazid ibn Muawiyah and Ubaidullah ibn Ziyad and Umar ibn Sa'ad were practicing Muslims. What was missing in them? Is it not enough to pray and to fast and to go to Hajj and come back from Hajj, be able to attend the mosques? If you see, apparently everything is there. All that they have done is that they have not been able to recognize the grandson of the Holy Prophet of Islam. No, they have taken a step further. They have killed the grandson of the Holy Prophet of Islam. But otherwise, as far as practicing Islam was concerned, they were all practicing Islam.
what is my understanding of Islam? Was the Islam understood in the same context as delivered by the Holy Prophet of Islam to them? Did they understand that Islam in the same context? Do I understand this Islam in the same context? When it comes to Jannat and Jahannam, or the concept of Jannat and Jahannam, Umar ibn Sa'ad says Jannat and Jahannam is something that has been promised. Even Allama Iqbal says this in his Shikwa. He says, "Qahr to ye hai ke kafir ko mile hur o qusur." The limit is that the kafir gets hur as well as big palaces and mansions. "Qahr to ye hai ke kafir ko mile hur o qusur aur bechare Musalman ko faqat wa'da-e-wa'd." The poor Muslim is only getting the promise of a hur, which is going to come. Umar ibn Sa'ad says, Jannat and Jahannam is a promise that I have heard of, that is going to happen one day when I die, when I am resurrected, when I come and see, that is when I will see Jannah. But this Ray, the city of Ray, the kingdom of Ray, the rulership of Ray is right in front of me. I will be a fool to leave Ray for Jannah on the day of Jannah. This is what Umar ibn Sa'ad said. So what is this concept of Jannat and Jahannam? If understood the way Umar ibn Sa'ad understood it, or the Muslims in general understand it, then we are grossly mistaken. What is this Jannat? What is this Islam? What is Allah subhanahu wa ta'ala? How do I understand my responsibility on earth? How? And how do I disassociate myself with all the ideologies that do not value human life, that do not understand human values? When the Holy Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa came and delivered the message, and he said, "Qulu la ilaha illallah tuflihu," say la ilaha illallah, and you will be successful in everything that you do. A poet here says, "Wo ek sajda jise tu giran samajhta." That one prostration that you consider to be heavy on you, that you consider to be weightier on you, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात. It gives you, or it liberates you from thousands of other sajdas that you do every day. All that is required is one sajda of Allah subhanahu wa ta'ala. Or a poet says in Urdu, he says, "Bade muzi ko mara, nafse ammara ko gar mara." You have really been able to kill a great detrimental thing to your soul if you are able to kill your nafs. Bade muzi ko mara, nafse ammara ko gar mara. Nahango ajdahao shere nar mara to kya mara. If you have been able to kill a crocodile, or you have been able to kill a python, or you have been able to kill a lioness, you have killed nothing. Bade muzi ko mara, nafse ammara ko gar mara. Nahango ajdahao shere nar mara to kya mara. Gaya shaitan mara एक ही सजदा न करने पर, अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या? All that was required of him was one sajda. 1,000 sajdas, one is liberated from thousands of sajdas, thousands of prostrations by one sajda. That is what the Holy Prophet of Islam says to these people. قُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تُفْلِحُ. Say La ilaha illallah. Not by your lips only, not by your tongue only, not verbally only. Immerse yourself in the tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala, and then know the purpose of life. If you just say it by understanding, you see, if I was to think about Jannat, there are two types of Jannat. There is a Jannat which has trees, palm trees, which has trees of dates, which have apples, which has streams of river flowing underneath. Allahu A'lam, Hur, there is Hur there, and they are in the tents. Hurun maqsuratun fil khiyam. Allah subhanahu wa ta'ala says, they are in the tents. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
So that is the Jannah. Is that the Jannah I want to go to? Is that the Jannah I am thinking of? Is that the Jannah that I am perceiving? Is that my final abode? Is that where I want to go? To eat grapes, how long? To eat apples, how long? To sit under the rivers and streams flowing underneath my feet, how long will I sit in this? In English they say familiarity breeds contempt. What happens next is you are bored. Is that the Jannah I want to go to? It is this Jannah that is in my head. It is for this Jannah that I am praying. It is for this Jannah that I am abstaining from committing sins. Is it this Jannah that I want to go to? Is that the Jannah I have in my mind? Is that my perception of the Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala wants to give? Even if it was granted to me today, what value does it have? Even if I was to live there, and I'm just as a thought only saying that this kind of Jannah is not the Jannah that Allah subhanahu wa ta'ala wants us to. And there is another Jannah that Allah speaks about. He says, Ya ayyatuha nafsul mutmainna, O the contented soul, irji'i ila rabbiki, return back to your Lord, radiyatan mardiyah, come back, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, and enter my Jannah. Allah doesn't need fruits, does He? He doesn't need trees, He doesn't need so many other things that you and I are imagining. He doesn't need them. He says, but I have a Jannah. Enter my Jannah. Now the choice is mine. How I understand the Jannah, what Jannah is my perception of Jannah, how I want to enter it, to be able to understand the purpose of Salat, the purpose of Saum, the purpose of Hajj, the purpose of so many things that we do blindly without understanding what is it that I have been created for. That is why they were not able to recognize the grandson of the Holy Prophet of Islam, Imam Al-Hussein salawatullah. They were not able to recognize him. They were not able to see him. They were not able to know that is what Hussein says to them. Listen, forget about these miracles. Forget about the Jannah. Jannah is in proportion to your proximity to Allah subhanahu wa ta'ala. The further you are from Allah subhanahu wa ta'ala, the further away you are from Jannah. The nearer you are to Allah subhanahu wa ta'ala, the nearer you are to this state of bliss. It is up to you how distant you want to be. This Jahannam that you are thinking of is a different. You see, our perception of Allah subhanahu wa ta'ala itself is so different. You know, it is Allah who is awesome. Oh, now awesome, I have to qualify the statement awesome. Awesome now means good. In today's language, awesome means good. You look awesome means you look good. The language is changing. Anyway, awesome here means full of awe, full of anger. That is my perception of Allah subhanahu wa ta'ala. And that is what I tell my children. Listen, if you do not drink milk, you're going to go to Jahannam. If you do not do this, you're going to go to hell. If you do not do this, you're going to go to the fire of hell. And therefore there is an impact from childhood in the head of my child that Allah is awesome. He is full of anger. All He does is takes people from one place and puts them to Jahannam. That is the perception that the child grows up with. Obviously he will distance himself from somebody who is so awesome. But tell Allah subhanahu wa ta'ala about the love of Allah. Explain to him how Kareem He is. Tell him what rahmah of Allah subhanahu wa ta'ala means. Tell him how beautiful He is. Show him where He is. Tell him where He lives. Show him all these things. And then see the relationship that he develops with Allah subhanahu wa ta'ala. My perception of him, my understanding of Islam, coming back to these people of Karbala. What was it that they were understanding? Allahu Akbar. On the day of Ashura, having killed Imam alayhi salatu wassalam, having brutally murdered him, they wanted to pray namaz. They prayed their namaz of Asr. And they went to Umar ibn Sa'ad and said, we would like to pray namaz, but we cannot establish the position of Qibla. If you can show us where Qibla is, then we can say our prayers. Umar ibn Sa'ad says, look at the spearhead or the lance upon which lies the head of Hussein.
and establish your Qibla, because I have never seen this head turn away from Qibla. So they prayed their salat, looking at the head of Hussein, knowing that this is Mahbatul Wahi, knowing that this is the house of Risala, knowing that the revelations have come to this house. Yet they did not recognize him. The problem is that our understanding of Islam, our perception of the message of the Holy Prophet of Islam is different than that was brought by the Holy Prophet of Islam, is different than that which is preached and talked about in Quran. Our interpretation of thousands of verses is different from the real message that was sent to us. And that is why we are lost in so many areas of law and bogged down in so many areas of law that we have forgotten the essence of the message, which was morality. What did the Holy Prophet of Islam say? He says, بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. I was sent to take akhlaq to its pinnacle, to the apex. The message that the Holy Prophet of Islam delivered was not to bog yourself down in so many other things. That freedom should be the freedom of your thought. That should be something that will develop and grow morals and morality in you, to be able to express yourself as a human being that values the human values. Otherwise, the Islam of Taliban, look at the Islam of Taliban. What kind of an Islam is it? Sometimes when you look at them, you get confused whether Islam is in the beard or the beard is in Islam. You get confused. You do not know whether Islam is in clothes or the clothes are in Islam. You get confused. They tie themselves and explode themselves and kill innocent people and then say that this is the injunction of Quran. Is that Islam understood? Is that the real Islam that the Holy Prophet of Islam was trying to bring? To be called so many other things that are happening, my fellow brothers and sisters. We need to revisit the basics. We need to go and understand the message of the Holy Prophet of Islam. We need to know what transpired. What was it that Hussein was saving? It surely was not the Islam that we are following today. It surely was not the Islam that was telling us to pray and fast only. There was something major, something grand that Hussein ibn Ali was trying to save. It was not our namaz and our rozas only. It was definitely something grand that Hussein was trying to save. The criminal minds of these people, you see, when you become stagnant and there is no growth or development in one, then stagnation creeps in. When stagnation creeps in, you start thinking in various directions. What kind of Muslims were they who did not understand human values? Killing a 6-month-old child with a 3-headed arrow was humanity. Killing an 18-year-old son in the presence of his father was humanity. Was understanding human values. No. You know, Bibi Sakina, they say in the riwayat, whether it was Bibi Sakina or another child, but when this child's clothes caught fire and someone came and extinguished this fire on the day of Sham-e Ghariba, on the night of Sham-e Ghariba, this child was surprised. She looked at this man with wonder and she says, how is it possible that there is someone with a heart present here? You extinguished the fire from my clothes. Can you do me another favor? Can you show me the way to Najaf? Why? My darling, why do you want to go to Najaf? I want to make a complaint. I want to go and say to my grandfather as to what has transpired here in Karbala. But instead of showing her the way to Najaf, the same person slept Janabi Sakina. What kind of minds were these? You know, trauma, if you imagine what trauma Bibi Sakina went through, to see the head of her own father on a spearhead was no ordinary trauma. असादारा इमाम हुसैन बस 2 जुमले आपके सामने वसाइल की पेश करके इंशाअल्लाह मैं अपनी तकरीर के दामन को समेट लूँगा। आशूर का दिन था,
अली अकबर शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, कासिम का लाशा दोनों की टापों से पामाल हो गया, अली असगर को 3 भाल का तीर लग गया। हुसैन इब्ने अली रुखसत हुए, हुसैन इब्ने अली भी मक्तल में आए। अब अब्दुल्ला जब वो वक्त आया कि जुलजना इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नशेब के पास लाया, तो एक मरतबा कहते हैं मक्तल में मिलता है कि जनाब ज़ैनब चूँकि अपने भाई को देख नहीं सकती थी तो दौड़ती हुई तिल्ले ज़ैनबिया पर आ गई ताकि अपने भाई की तरफ निगाह कर सके। अगर भाई नज़र नहीं आया, बेकरार होके दौड़ती हुई आबिद बीमार के खेमे में आई, बेटा सैयद सज्जाद देखो बाबा क्या हुए, बाबा नज़र नहीं आ रहे। यहाँ ज़ैनब दौड़ती हुई खेमे की तरफ आई। वहाँ मक्तल में मिलता है कि जुलजना ने एक अजीब व गरीब फ़ेल अंजाम दिया, अपने सर को हुसैन के खून से मला और दौड़ता हुआ खेमों की तरफ दौड़ा। यहाँ जुलजना खेमे की तरफ दौड़ रहा था, वहाँ यजीद हुसैन की, यहाँ वहाँ शिम्र हुसैन की तरफ आ रहा था। आहिस्ता आहिस्ता शिम्र हुसैन के नज़दीक पहुँच रहा था, जुलजना खेमे तक पहुँचा। यहाँ शिम्र हुसैन के पास आया, वहाँ जुलजना खेमे के नज़दीक पहुँचा। यहाँ शिम्र मौला की पुश्त पे सवार हुआ, वहाँ जुलजना खेमों तक पहुँच गया। बस 2 जुमले सुनिए, वहाँ जुलजना खेमों तक पहुँच गया। एक मरतबा बीबियाँ खेमों के बाहर निकल आईं, बीबी ज़ैनब खेमे के बाहर निकल आईं और निकलने के बाद उस जुलजना को देखा, एक जुमला कहा, या ज़ुलजनाह, ए जुलजना, ऐन तरकतल हुसैन, तुमने हुसैन को कहाँ छोड़ दिया। ये बच्चियां और बीबियां अभी पूछ रही थी, बस इशारा सुन लीजिए, अभी पूछ रही थी कि जमीन को ज़लज़ला आया, सियाह आंधी चलने लगी, फुरात नेज़ों उछलने लगा, मुनादी ने आवाज दी, अला क़द क़ुतिल अल हुसैन बि करबला, अला क़द ज़ुबिह अल हुसैन बि करबला। ये तमाम चीजें हो गई। सानिए ज़हरा का दिल बेकरार हो गया, सैयद सज्जाद को जगाया, बेटा सैयद सज्जाद उठो, देखो बाबा क्या हुए, देखो बाबा को क्या हुआ। खुदा किसी बेटे को अपने बाप का ये हाल न दिखाए। आबिद बीमार एक मर्तबा खड़े हुए, कहा फूफी अम्मा सहारा दीजिए। आबिद बीमार को फूफी अम्मा ने सहारा दिया। एक मर्तबा खेमे के नजदीक आबिद बीमार आए, खेमे का पर्दा उठाया, दाहिनी तरफ देखा कुछ नजर नहीं आया, बाईं तरफ देखा कुछ नजर नहीं आया। एक मर्तबा आसमान की तरफ देखा, खुदा किसी बेटे को अपने बाप का ये हाल न दिखाए। नोके नेज़ा पे बाबा का सर नजर आया, आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, ए अबा अब्दुल्ला, आप पर मेरा सलाम हो। ये आबिद बीमार है, ये सैयद सज्जाद है। दूसरा दिन आया, आबिद बीमार के हाथों में हथकड़ियां बांधी गई, पैरों में बेलियां, गले में तोके खारदार, मेरा और आपका मौला एक मर्तबा लाया गया। एक मर्तबा सैयद सज्जाद को उस जगह लाया गया जहां हुसैन का लाशा उरियान पड़ा हुआ था। जनाब ज़ैनब आई, जनाब सैयद सज्जाद आए, हुसैन का उरियान लाशा घोड़ों की टापों से देखा। मैं नहीं, इशारों में सिर्फ एक बात सुन लीजिए। कहते हैं कि हुसैन इब्ने अली के बदन को के साथ इतनी तौहीन की गई थी, हुसैन के बदन के साथ इतनी तौहीन की गई थी। किसी ने क्या लिखा है, किसी ने क्या लिखा है, इससे मैं नहीं कुछ कहना चाहता, सिवाय एक जुमला कहना चाहता हूं कि जब ज़ैनब ने हुसैन के उरियान लाशे को देखा तो एक सवाल पूछा और सिर्फ ये कहा, अंत अखी या हुसैन, ऐ हुसैन क्या तुम मेरे भाई हुसैन हो, ऐ हुसैन क्या तुम मेरे भाई हुसैन हो। यानी जिस हुसैन को ज़ैनब न पहचान पाई, अरे उस हुसैन के बारे में आप, उस हुसैन के बदन के बारे में क्या बयान कर सकता हूँ। आबिद बीमार को लाया गया, सैयद सज्जाद ने देखा, सैयद सज्जाद ने देखा, अपने बाबा को देखा, जिसका सर नोके नेज़ा पे कल रात को देखा था, जो अपने बाबा के बदन को देखा।
बैठ गए। जनाब ज़ैनब कहती हैं मैंने सैयद सज्जाद को देखा, मगर एक मर्तबा देखा सैयद सज्जाद का ऐसा हाल हो गया था जैसे कि रूह परवाज हो रही है। दौड़ती हुई सानी ज़ारा सैयद सज्जाद के पास आई, बेटा सैयद सज्जाद मेरे लख्ते जिगर क्या बात है, क्या बात है, क्यों इतना गिरिया कर रहे हो? कहा फूफी अम्मा फकई फैलाब की, मैं कैसे न रो फूफी अम्मा, मेरा बाबा, मेरे बाबा का लाशा घोड़ों की टापों से पामाल हो गया। ये काफिला लेके आबिदे बीमार कूफे की सरहदों तक पहुंचे। कूफे की सरहदों में जब आए हैं तो ऐलान हुआ कि बीबियों को महमिलों से, बीबियों को ऊंटों से उतार दिया जाए और उतारने के बाद आराम करने का हुक्म दिया जाए। अभी कूफे का बाजार तैयार नहीं हुआ। एक मर्तबा आबिदे बीमार ने रोना शुरू किया, गिरिया शुरू किया, इतना हजीन बुका, इतना हजीन गिरिया कि सानी ज़हरा फिर आ गई। मेरे सैयद सज्जाद, मेरे लाल, मेरे लख्ते जिगर क्या बात है, क्यों रो रहे हो? जब तुमने अपने भाई अली अकबर को रोके नेज़ा पे देखा था तो इतना नहीं रोए थे, जब तुमने अभी बाबा को करबला में छोड़ा तुम इतना नहीं रोए। मेरे बेटे ये रोने का क्या सबब है? एक मर्तबा आबिदे बीमार ने कहा फूफी अम्मा आपने ऐलान सुना? कहा कौन सा ऐलान? कहा ऐलान हुआ है कि कूफे का बाजार तैयार नहीं है। फूफी अम्मा मैं कैसे उस बाजार में जाऊं जहां मेरी माएं, मेरी बहनें सरबरे ना फिरे। पालने वाले हमारी इस तरील अज़ादारी को पालने वाले जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल और आजिल अता फरमा। बीमारी जो मखलूस हैं उनके कर्ज़ों को जल्द से जल्द अदा कर। जो बेऔलाद हैं उनको औलाद सालिह अता फरमा। जो हज व ज़ियारत के मुश्ताक़ हैं उन्हें हज व ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। क़ाइम आले मोहम्मद की ज़ुहूर में ताजील फरमा। उनके ज़ुहूर पे उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। मालिक जब हमारा आखिरी वक्त हो, हमारी आखिरी सांसें हों, हमारे जांकनी का वक्त हो, या अल्लाह उस शैतान को हमसे दूर रखना। उस वक्त हमारे दिल में मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत रखना। पालने वाले अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना फ़िद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फ़िल आखिरति शफ़ाअतल हुसैन वहशुरना यौमल क़ियामति मअल हुसैन व औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। मजलिस शब्बीर में आती है माँ शब्बीर की, कहती है क्या ए मोमिनो तुमसे ये माँ रोती हुई। जख्मी है मेरा लाडला, जख्मी है मेरा लाडला, मरहम मुझे दे दो कोई, मरहम तो है सब जख्म तो दिल भी रखे। धोखा ऐसे है मगर बढ़ते नहीं शब्बीर के। ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का। मातम करो मातम करो कर गया शब्बीर का। माँ आ गई शब्बीर की, मातम करो शब्बीर का। खंजर तले नेज़े पे भी करते रहे शुक्र खुदा। ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले शब्बीर नहीं भूले।
एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का, तीरों पे था लाशा तेरा, रोती रही करबो बला, खेमे का जब पर्दा उठा, बोली बहन भैया मेरा, लाशा तरफ कर गया, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का, सुगरा उधर रोती रही, मौला इधर रोते रहे, वह मुंतजिर बीमार थी, या कत्ल सब होते रहे, सहरा में घर लुटता रहा, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का, लिपटी सुमे आस पास थी, वो लाडली बेटी तेरी, मालूम था मौला तुझे अब ना मिलेंगी ये कभी, फिर भी सोए मकतल गए, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का, दरबार में बाजार में जिंदान में हर आन में, कैसे सितम सहती रही बेटी तेरी बहना तेरी, देखा किए नेज़े से सब करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले। एक चादर ज़ैनब की, एक चादर ज़ैनब की, एक सीना अकबर का, नेज़े पे भी सर है तेरा, फिर भी तेरी क्या शान है, ये सर है मौला तेरा, या बोलता कुरान है, तन से जुदा सर हो गया, करते रहे शुक्र खुदा, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले, ना भूले ना भूले, शबीर नहीं भूले। Hussein, 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 Hussein. वक्त जब के ज़ैनब दरबार में गई थी, खारी नमाजियों से महफिल सजी हुई थी, जालिम ये पूछता था गाजी तेरा कहाँ है, बालों से मुँह छुपाए ज़ैनब ये कह रही थी, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है सर झुका, ऐ मेरे बाबा जान हो रही है सर झुका, मजमा-ए आम में बेवतन बेअमां
अरमान है मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ मैं भी हूँ मर्जिया बिन्त खैरुन्निसा मेरे लहजे में है बाबा तेरी अदा नाम ज़ैनब मेरा तूने जो रख दिया दे दिया अपनी जुबान मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ बाबा जान मेरी मांगती रह गई बामोदर सज गए जीते ही मर गई हलवा है शाम में नाम सुन कर मेरा मर गया ना मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ हाथ कानों पे है नील गालों पे है और निशान जो सकीना की शानों पे है हर निशान से यही आ रही है सदा बाबा जान है मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ है मेरे बाबा जान हो रही है जान सर झुकाऊं कहाँ शाम आशूर से शाम कूफा तलक मैंने मांगा नहीं है खराजे फलक मेरी चादर से है मेरी माँ का सुकून सुन जालिम जहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ बाबा जान ये तेरा आखिरी था बयान तेरी चादर बचाएगा सी जवान मर गया बाबा चिन गई है रिदा कहती है बीबिया अब्बास 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 रुक न पाया मेरे बावफा का उतर नोके नेज़ा से आने लगा खाक पर बहन को दर बदर देख नंगे सर सहना पाया जहाँ है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ है मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान सर झुकाऊं कहाँ हाथ कानों पे है नील गालों पे है और निशान जो सकीना के शानों पे है हर निशान से यही आ रही
रही है सदा बाबा जान, बाबा जान मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाओ कहाँ। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाओ कहाँ। है सख्त बादियाँ मैंने दरबार में लिख रहा है जो नावर तेरे प्यार में, लहजे हैदरी हर अज़ां के लिए है सदाए अज़ान। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाओ कहाँ। मेरे बाबा जान हो रही है अज़ान, सर झुकाओ कहाँ। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। मैंने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। आशूर के मंजर को दरिया की रवानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। अकबर को लगे बरछी दम निकले मेरी माँ का, अकबर को लगे बरछी दम निकले मेरी माँ का। लैला के उजड़ने को, लैला के उजड़ने को, ज़ैनब के तड़पने को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। गाजी के कटे बाजू और तीर लगा दिल पर, गाजी के कटे बाजू और तीर लगा दिल पर। इन हाथों के गिरने को, इन हाथों के गिरने को और गिर के संभलने को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। मैदान से जब बाबा लाए अली अकबर को, मैदान से जब बाबा लाए अली अकबर को, हर गाम पे गिरने को, हर गाम पे गिरने को और गिर के संभलने को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। कब शाम के रास्ते में ऊँटों को भगाते थे, कब शाम के रास्ते में ऊँटों को भगाते थे। बच्चों के वो गिरने को, बच्चों के वो गिरने को और माँ के रोने को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं, आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को भूला नहीं मैं। चेहरे को पुपी बहने बालों से छुपाती थी, चेहरे को पुपी
भी बहनें बालों से छुपाती थी बाजार के मंजर को, बाजार के मंजर को और सबके खुले सर को। भूला नहीं मैं आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को। भूला नहीं मैं आशूर के मंजर को, दरिया की रवानी को। भूला नहीं मैं आबिद ने कहा रो रो करबल की कहानी को। भूला नहीं मैं बरोज हफ्ता 23 जनवरी को मेरे घर के मजलिस से आप तमाम मोमिन-मोमिनात से शिरकत की गुजारिश है। और एक और मजलिस का समर्थन है कल संडे को इतवार बरोज 17 जनवरी दिन के 2:30 बजे मजलिस है इफ्तार में जनाब मुर्तज़ा काफी साहब के घर पे, जिससे मौलाना साहब खिताब फरमाएंगे। आप तमाम हज़रात से शिरकत की गुजारिश है। आपको अगर इंटरेस्ट चाहिए होगा तो आप इसके बाद मुझसे रब्ता कायम करें। एक इल्तमास फातिहा है सैयद हादी इमाम ज़हरी साहब के लिए। आप तमाम मोमिन मोमिनात की गुजारिश है कि 1 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह अलहम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास तिलावत फरमा के मरहूम की रूह को इशारा